Hello friends, welcome to our channel. Hope you all are doing fine. Today we will be starting a different subject and first chapter of it, database management, which is from the 4th semester iSCHEM, creating relational database. Let's get started. So this is our very first question which can be asked for 4 marks in MSPT end semester exam. So explain RDBMS terminology. This can be asked for 4 marks. I'm not sure, but if then. Okay, so the very first question is explain RDBMS terminology. This might get asked in MSPT end semester for 4 marks. So the answer is, suppose we are having a student table which consists 2 columns, name, roll number and name. Okay, so the column roll number has rows 1 to 3 and the column name has Sita, Geeta and Neeta. Following are the terms which we need to write in this answer. We have to draw a student table. Okay, so now tuple is the very first thing which we will be write, because the tuple, attribute, domain, degree of a table and cardinality are the terminology of RDBMS. Okay, so tuple. In relational model, a row is called as a tuple. Example to Geeta. Let me tell you what is tuple exactly. See, in the student table, look, this row and this row. Okay, so tuple is nothing but a particular row. Okay, attribute, column header is called as attribute. For example, you see this roll number and the name in the student table, it is nothing but attribute. Domain or permissible values are called as domain. The domain for roll number can be 1, 2, 3, Sita, Geeta, Neeta. What does permissible means? Permissible means nothing but existing. What are the existing? What are the null values? Okay. Degree of table. Number of attributes of the table is called as degree of the table. Degree of student table is 2. See, this student table, there are 2 columns. The 2 columns are called as attributes. Okay, so degree of a table means the 2 attributes which we need to count. Like if we add another column, name, phone, so the degree of student table will be 3, as there are 3 columns. Cardinality. Now what is cardinality? The number of rows in a table is called as cardinality. For example, in our student table there are 1, 2 and 3 rows. Okay, the difference between degree of a table and cardinality is that in degree of a table we count the attribute or the column, and in cardinality we count the number of rows. Okay, now the next question is, okay, so the next topic is relational database design. What is RDD? See, RDD is a model which shares information and data into a set of tables with rows and columns. So each row of relational table represents a record. Like in the previous answer I had showed you the student table. It has some record, like rows holds the record and the column holds like what is it about, like roll number and student. So each row of relational table represents a record and each column represents a data. The structured query language, which is SQL, is used to manipulate relational database. The SQL, which is structured query language, is going to be there in 1.3 topic. Okay, so first we will list types of relational database software, RDBMS. ठीक है, MariaDB, DB2, SQLite, Oracle, Database XC, SQL Pro,
PostgreSQL, SQL Server Express, MySQL are some types of RDBMS software. This might come for the exam for 2 marks as the same question, types of RDBMS software. Now we have the next topic. Last semester in Principle of Database we have done this topic, but as it is a part of our first chapter in this 4th semester, we again have to do this. So if no one remembers, just look at it. See, in integrity constraint we have 3 types of integrity constraint: domain integrity constraint, entity integrity constraint, and referential integrity constraint. Okay, so in domain integrity constraint we have 2 types: not null and check. In entity integrity constraint we have primary key constraint, unique key constraint. In referential we have foreign key. Okay, so what is integrity constraint? Integrity constraints are divided into domain, entity, and referential integrity constraint. This question might be asked for 1 mark in MSBT. So here is its definition, and what we have to write in exam is that a definition, and we have to explain in 1 line what is domain, entity, and referential. You can take a screenshot or you can directly learn from this slide. Okay, so domain constraint has not null constraint, check constraint as I shown you above in the diagram. Entity constraint has primary key constraint, unique key constraint. Referential constraint has foreign key constraint. Okay, so now we will go with entity integrity constraint. Entity integrity constraint ensures that there are no duplicate records within the table. Entity integrity constraints are of 2 types: primary key and unique key. See, what does entity integrity constraint do? It ensures that whether the row is null or not, or whether the column is duplicate or not, like that. So first is primary key constraint. Okay, so primary key constraint uniquely identifies each row in a table. Primary key avoids duplication of rows. Primary key do not allow null value. What does this mean? See, it's very easy. Okay, no need to panic. See, for example, if we set a primary key for employee ID, like in for example, if we are studying in college, we have our own roll number. Okay, so everyone's roll number is unique. So primary key is nothing but uniqueness. Okay, so primary key, if we set it for employee ID, so we have to see whether it is null or not. Okay, because nulls are not allowed in primary key, and whether the primary key duplicates or not. तुम्हारा और तुम्हारे फ्रेंड का रोल नंबर्स कभी सेम होता है या तुम्हारे कोई भी क्लासमेट का नहीं ना, इट्स द सेम थिंग. तुम्हारा प्राइमरी की अगर तुमने किसी चीज़ पर सेट किया है तो तुम्हारा रो कभी नल नहीं हो सकता, तुम्हारा कभी रो जो है वो डुप्लीकेट नहीं हो सकता. ओके, नाउ वी हैव यूनिक की. ओके, फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट हाउ टू सेट अ प्राइमरी की कंस्ट्रेंट. ठीक है, for that we simply have to write the command which is create table employee. The command word create will create a table named employee. Okay, so employee, in the table employee we have the following we say what column. Okay, which will be employee ID, employee name, here it is ename, salary and phone. ठीक है, after the first statement we will write emp id, which is our column name. Then we will write the number, which is a data type of emp id, which, and you will be thinking what is that 3 return. So it is nothing but the size of the primary I mean the employee id. जैसे कि 111 222 333 ऐसा. It can't be like 1 2 3 4 in one time like that. So we write the keyword after that. मतलब जहाँ पर भी हमें प्राइमरी की सेट करना है हम लोग उसके बाद में प्राइमरी की ये कीवर्ड लिखते हैं. Then we put a comma, फिर ename, varchar is again a data type, उसका size है 10.
फिर सैलरी नंबर विच इज़ 7,2. 7,2 दिस means that it is in decimal, okay, and phone number which holds 10 number size. Okay, so you will be thinking कि why there is not a comma after phone number. See, when we don't put a comma after phone number, it indicates that it is the end of the column. अगर तुम लोग ने comma डाल दिया उसके पीछे तो ऐसा होगा कि वो जो SQL स्टेटमेंट है वो डिस्प्ले करेगा कि नहीं ये तो एंड कॉलम नहीं है, हमें एंड कॉलम चाहिए ऐसा. देन क्लोज कर्ली ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट एंड देन सेमीकोलन. नाउ वी हैव यूनिक की. Unique key avoids duplication of values in a columns. Column defined with unique key allows null value. See, प्राइमरी की में कैसा था कि हम लोग नल वैल्यूज़ भी नहीं डाल सकते और डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी नहीं डाल सकते थे. और यूनिक की में ऐसा है कि वो डुप्लीकेट वैल्यूज़ को अलाउ कभी नहीं करेगा, लेकिन वो नल वैल्यूज़ को अलाउ कर देगा कॉलम के अंदर. ओके, सो अभी इसमें हम लोग एग्जांपल लेते हैं एम्प्लॉय टेबल का. इन द एम्प्लॉय टेबल सपोज वी हैव सेट यूनिक की टू द फोन नंबर. ओके, सो फ़ोन नंबर पे जब हम लोग यूनिक कर सकते हैं, वी ऑल हैव फ़ोन नंबर्स. इज़ देयर, डू वी हैव अ कॉमन फ़ोन नंबर? डू एनीबडी हैव अ कॉमन फ़ोन नंबर? नहीं ना. तो दैट्स द थिंग. हम लोग फॉर एग्जाम्पल वी आर पुटिंग अ रिकॉर्ड, ओके, इन द एम्प्लॉय टेबल. वेट, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ 1, दिस इज़ A, हिज सैलरी समथिंग 70 rupees for now because there is no space, and his number is 1 2 3 4 whatever. ठीक है, and we put employee ID 2, e-name B, salary some 70,000 only we'll put for them or 70 rupees whatever. So फ़ोन नंबर में अगर हम लोग ने इनका फ़ोन नंबर नहीं डाला, यूनिक सेट किया तो फ़ोन नंबर नहीं डाला, तो भी इट विल अलाव, okay, it will allow you to insert your data in that table. So let's check how unique key is set. See, unique key हम लोग ऐसे सेट करते हैं कि we'll write again create table employee, जहाँ पर हम लोग एम्प्लॉय का टेबल क्रिएट करेंगे. देन emp id number which is a data type, again its size, comma, e-name varchar 10, comma, सैलरी नंबर 7,2. जैसे अभी हम लोग ने प्राइमरी की में किया था सेम वैसे ही प्रोसेस है, बस फ़ोन नंबर पे वी हैव रिटन यूनिक. रिमेंबर दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि वी हैव टू राइट यूनिक, नॉट यूनिक की. इन प्राइमरी की वी हैव रिटन प्राइमरी की. इन यूनिक वी विल नॉट राइट यूनिक की, वी विल जस्ट राइट द वर्ड यूनिक. And we have not put the semicolon because it's the end of the table. Okay, now we continue with domain integrity constraints. See, domain integrity constraint is used to maintain value according to user specification. मतलब कि हम यूज़र को जैसे चाहिए टेबल अपना क्रिएट करने के लिए या इनपुट डेटा के लिए, तो उस बेसिस पर हम लोग डोमेन इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट यूज़ करते हैं. इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, नॉट नल कंस्ट्रेंट एंड चेक कंस्ट्रेंट. नाउ लेट्स सी व्हाट नॉट नल कंस्ट्रेंट डज. इट इज़ अप्लाइड ऑन अ पर्टिकुलर कॉलम टू अवॉइड नल वैल्यूज़. ठीक है, मतलब क्या होगा कि हमारा जितने भी कॉलम्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग ने जो एम्प्लॉई आईडी है उस पर सेट किया है नॉट नल, तो वो कॉलम कभी भी नल नहीं हो सकता, मतलब खाली नहीं हो सकता वो रो. देर हैज़ टू बी सम नंबर. ओके, फॉर एग्जाम्पल अप्लाई नॉट नल कंस्ट्रेंट ऑन ई नेम. अच्छा, इसमें इस एसक्यूएल की क्वेरी में ई नेम पर सेट किया. लेट्स सी, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय आईडी 3, ई नेम varchar नॉट नल. वी हैव टू यूज द वर्ड नॉट नल टू अप्लाई नॉट नल कंस्ट्रेंट. ओके, this is check constraint. In check constraint we have it identify a condition that each row must satisfy. What does it mean? Suppose हमारा कुछ सैलरी है, in this example there is given salary.
सो हमें चाहिए कि वो डिस्प्ले करे 5000 के ऊपर का सैलरी. सो वी विल राइट इट एज चेक सैलरी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5000. ओके, मतलब तो ये not only salary, you can put an age. For example, we have a column named age. So age number 2 or size, and then we will write check age is greater than equal to 18 for example. तो मतलब उसका मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल एंड ईजी थिंग. रो को क्या कंडीशन हम लोग मतलब हमें क्या चाहिए कि वो रो सेटिस्फाई करे कोई कंडीशन. नाउ वी हैव रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट. ठीक है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट में आता है फॉरेन की. अ फॉरेन की इज़ अ प्राइमरी की फॉर वन टेबल एंड अपीयर्स एज अ फील्ड इन अनदर टेबल. इसका मतलब वेरी सिंपल है कि हमारा कोर्स जो है वो है प्राइमरी की पेरेंट टेबल और हमारा स्टूडेंट जो है वो चाइल्ड टेबल है. ठीक है, सो प्राइमरी की एक टेबल का मतलब कोर्स टेबल का जो है वो अपीयर करेगा फॉरेन एज अ फॉरेन की इन स्टूडेंट टेबल. सो कोर्स आईडी इज़ अ फॉरेन प्राइमरी की इन पेरेंट टेबल and it appears as a foreign key in child table. So how to set a foreign key? See, to set a foreign key we have to write for example on which table course id जो है उस पर foreign key है ना, तो we'll write course id varchar 3 foreign key, then in round brackets we will write the column name, then references course id. Again I'll repeat it. Column first we will write foreign key, then we will write the column name in the round brackets, then we will write the word references, then we will write the parent table name, I guess, yeah, parent table name, and then we will write the parent table का जो primary key है. Got it? Now cover what is on delete cascade. Okay, so if a record in the parent table is deleted, then the corresponding record in the child table will automatically get deleted. This is called as on delete cascade. Again, if you didn't understood, I'll go to this table for you to understand. See, अगर हमने इस टेबल सपोज हमने ये IF इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को डिलीट किया फ्रॉम द पेरेंट टेबल, तो चाइल्ड टेबल का जो भी रिकॉर्ड है सेकेंड इस पे दैट विल ऑल्सो ऑटोमेटिकली गेट डिलीटेड. दिस इज़ ऑन डिलीट कैस्केड, नथिंग एल्स. सिंपल, easy. So I'll be covering the structured query language 1.3 topic in the next video, or else this video will become very large and then it will be hard for you to get the concept. So till then, take care, bye.